शताक्षी आनंद युवा लेखिका हैं और आपकी पहली पुस्तक फेयर टेल से साहित्यिक पारी की शुरुआत कर रही हैं। आपने कानूनी शिक्षा प्राप्त की है और वर्तमान में आप प्रोफेसर हैं लॉयड लॉ कॉलेज ग्रेटर नोएडा में। हमारे बीच में आदरणीय सच्चिदानंद सिंह सर यहाँ पर विराजमान हैं। आपके बारे में बता दूं कि आप लखनऊ के प्रसिद्ध अंग्रेज़ी शिक्षकों में से एक हैं। अंग्रेज़ी और उर्दू दोनों ही भाषाओं पे आपकी अच्छी पकड़ है। वर्तमान में आप एक फैंसी शीर्षक वाली किताब पर काम कर रहे हैं जिसका नाम है द गज़ल इन ब्लू जीन्स। Good afternoon, everyone in the audience. Good afternoon, Shatakshi. Good afternoon, sir. What are your first impressions of the city of Lucknow? I have frequently been to Lucknow और नवाबों का शहर है ये, बेहद खूबसूरत, beautiful city. And you know, this city, I have two special fascinations for this city. One is chicken kakurta and the other one is the kebabs of the city. So the food, the dress, and obviously literature. When you said chicken, I nearly came to the kebabs, but then I came back to the... So good that you mentioned it. This book is meant for children, right? Do you think that even grown-ups like us would be interested in a book like this? So, this book, sir, is for first-time readers. Those who have not even for once read any tale and maybe, probably can't even read. It is for the parents to read it aloud to the children. This book is for those who have already read the fairy tales, and the children should contrast with the classic fairy tales. And this book is for us, who for years have heard these fairy tales. Some of us may have felt uncomfortable, some of us may have been okay with it. So it is for them also to realize such gender stereotypes which exist and we don't even acknowledge it. So it is for every age group, sir. Great. What is your opinion of literature for children that is available in India, particularly in Hindi and English? Okay. First of all, sir, I'm happy that you're considering this book as a part of the literature. If we are having this discussion out here, this itself is like a credential to me. Thank you, sir. I was actually, when I was writing this about the book, I went through the journey of understanding whether exactly fairy tale will come into the category of literature. There is contrast opinion about it, but definitely it is coming into the category. So now, coming back, sir, so it's basically when we were kids, about Indian authors, we had a very limited collection. We could read Panchtantra, we could read a few more Children Book Trust and National Book Trust and BTK books. We had a comparatively limited collection. We used to read Enid Blyton and the Melody Towers of Enid Blyton, and there were Ruskin Bond and authors like that. But the literature available at that time was not very refined as it is currently. The classics are still there, but the new authors, and there are publishing houses which are solely focused on English literature for children. And Indian authors are doing such a tremendous work in it, the Puffin publication and all that. So now the English literature has really grown wide in scope as compared to what we had as available when we were kids back then. So. Great, but the students of these days, particularly the younger lot, they are more familiar with characters like Shin Chan and Pikachu and Chota Bheem. I mean, do you feel that bringing in these fairy tales is a better idea than, doing characters like Shin Chan and Chota Bheem and all these and giving them the same things using different material? So, fairy tale, I think, is from time immemorial, whereas Shin Chan or whatever cartoon that we talk about has a life of its own. It will live its life, and probably it will, right now only when I became a parent, by the time I
I mean, I don't know what my son will continue to see, but I will definitely filter that content and not allow those But content. what is he watching now? He doesn't watch anything. It just Oh, that's great. any random thing that If pleases he's him. into reading, then he Yeah, is on he's the right 18 way. months, sir. I only have to read to him. For him, books, he will tear it into pieces if I give the book to him. So, Acha. sir, coming back to your question, sir, why I thought about fairy tale? Because fairy tale, even today, there is a retelling of it going on. It never lost. It was never there. It is always there in vogue. So it is something which has been forever and it will be forever. That is the reason why I picked up, instead of developing a new character, I began my journey from it. See, some tales, कुछ कहानियाँ हमेशा रहती हैं. I'm switching over because so many people. कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जिनको बार बार सुनाया जाता है. रामायण की कहानी वाल्मीकि ने लिखी, तुलसीदास ने लिखी, इतने सारे लोगों ने लिखी, अमीश त्रिपाठी ने भी लिखी. बिल्कुल ठीक है. तो ये जो फेरी टेल्स हैं, ये हमारे शिक्षा के जो स्कूल हैं, जो शिक्षा प्रदान करते हैं, वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाने का मतलब एक पॉइंट पे जाके ये हो जाता है कि इंग्लिश लिटरेचर भी पढ़ाया जाए. और इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाने में उनकी जो लोक कथाएं हैं वो धीरे धीरे आने लगती हैं. वैसे कोई भी कहानी हो, कहीं की कहानी हो, कहानी कहानी होती है. आपने जब इन कहानियों को नए नज़रिए से देखा तो आपको क्या लगा कि ये जो फेरी टेल्स हैं इनके साथ क्या क्या किया जा सकता है? बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ क्रिएटिविटी, यू नो. सिर्फ ओरिजिनल कहानी लिखने से ओरिजिनलिटी नहीं होती है. एक ओरिजिनलिटी और होती है जो एलियट और पाउंड और इन लोगों ने किया. दूसरों की लाइनें ले करके उसकी एक अलग मीनिंग निकाल देते हैं. वो कहते हैं कि ये ज़्यादा आसान है. ठीक है. तो उस तरीके की जो ओरिजिनलिटी है आपकी वो दिखाई पड़ती है इसमें. हालांकि कहानी रेपुंजल की है, स्नो वाइट की है, ब्यूटी एंड द बीस्ट की है, लेकिन उसमें ये लग जाता है कि कोई भारतीय बोल रहा है. ये आपने कैसे अचीव किया? मैं संविधान की प्रोफेसर हूँ, आई टीच कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एंड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को भी कहा जाता है बैग ऑफ बोरोइंग, लोगों ने कहा है. बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को भी कहा जाता है वन ऑफ द मोस्ट यूनिक डॉक्यूमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड. ऐसी चीज़ें यहाँ पाई जाती हैं जो कहीं भी और किसी संविधान में नहीं पाई जा सकती हैं. सो सिमिलरली अगर मैं किसी यही इंडिविजुअल एवरी स्टोरी सर जैसे इज़ लाइक द फिंगरप्रिंट, मेरे और आपकी फिंगरप्रिंट का भी सेम नहीं हो सकती है. सिमिलरली एवरी ऑथर हैज़ अ ओन वे ऑफ राइटिंग. Maybe if tomorrow you rewrite the same fairy tale, your perspective would be different. So when I introduce my book to my audience or to anybody, I always say this: I am not promising you that I have given you the best retelling or that nobody else could retell it in such a way. Maybe tomorrow, right now, from the audience, somebody could give even more interesting twist to it. What my focus was to highlight points which were considered to be okay or probably not considered to be okay, but nobody was doing anything about it. So that is the, if I say that is my forte or probably the uniqueness in my book. Sir was also given with the idea whether to take away magic from the book. Because magic is not realistic, and children nowadays are we believed in Santa Claus for a long time. These children don't believe. They know Papa Mummy hi rakhenge gift ko. So I was in these two minds whether to provide them with magic or not. But then I realized magic is imagination. And that should always be given to children. Other than that, everything, the tree, the plants, the figure, she can see. But fairy god, how the fairy god looks, is something each child will have their own imagination. So that is why magic should never be taken away from children. Excellent. So now, what is it that you noticed in India? आपने ऐसा क्या देखा अपने अगल बगल कि आपको ज़रूरत पड़ी कि इसमें ये एलिमेंट डालना है, कि ये आइडिया अगर बचपन में बच्चे के मन में डाल दी जाए कि नारी हीन नहीं होती है, नारी जो चाहे वो कर सकती है. मेरे ख्याल से ये
आपके दिमाग में आया होगा कि बचपने में ही बच्चे के दिमाग में डाल दिया जाए, ताकि कोई भी रेपुंजल अपने भाई का इंतज़ार ना करे कि वो उसे बचाएगा, बल्कि वो डूबते हुए भाई को, जैसे आपने दिखाया है, जी सर। रेपुंजल अपने बाल से उसको बचा लेती है। तो ये जो इन्वर्जन किया है आपने, उससे एक असाधारण सी मैजिक पैदा हो गई है। तो इसके ऊपर क्या ये आपने सोच के किया है या अपने आप हो गया है? नहीं सर, आई थॉट ओवर इट, सोच के ही मैंने किया कि मैं जैसे हमारे आसपास जो भी चीज़ें दिखती हैं हमें, सबसे पहले तो जब मैं फेरी टेल्स खुद पढ़ती थी, आई वॉज नॉट एबल टू कम्प्लीटली रिलेट टू इट बिकॉज every single fairy was flawlessly fair, had a sky blue, beautiful, beautiful eyes and golden hair. Maybe that's a foreign tale that we are reading, but then that doesn't mean that every fairy tale was supposed to look like that. So मैं अपने आप को कभी एज अ फेरी इमेजिन ही नहीं कर सकती थी। मेरे स्कूल में when we used to do one act plays or anything, the fair kids used to be the fairies. एंड मैंने रोल प्ले किया है। इनफैक्ट दिस इज़ नॉट ओनली अबाउट द क्रिश्चियन माइथोलॉजी और एनी पर्टिकुलर रिलीजन। आई वॉज अ पार्ट ऑफ डांस ड्रामा जहाँ हमने पूरा दुर्गा सप्तशती का किया था। एंड द दुर्गा वॉज सेलेक्टेड ऑन द क्राइटेरिया शी मस्ट हैव वेरी ब्यूटिफुल आईज एंड शी मस्ट बी वेरी फेयर बिकॉज शी इज़ नॉट काली, she is Durga, she has to be fair. And I was given the role of शुंभ का दूत हूँ लाया हुआ। तो this somehow came to my mind from my childhood that yes, there is a particular look to a particular a particular thing to hold. Like for a fairy you need to be beautiful. I really objected that idea. Moreover, when I started reading, sir, I realized fairies can be male too. Cupid, internationally celebrated, is a male fairy. लेकिन अगर हमने बोली जाए, हमारे पास परी होती है, हिंदी में तो हमारे पास कुछ शब्द ही नहीं है, हम मान के ही चलते हैं कि फेरी मतलब परी होगी और वो एक फीमेल होगी, बट फेरी कैन बी अ मेल टू। एंड हम लोग ये सोचते हैं कि ये जो पेट्रियार्कियल सेटअप है ये सिर्फ हमारे हिंदुस्तान में है, जबकि ये सारी की सारी फेरी टेल्स जिनके ऊपर आपने काम किया है ये सब पश्चिम से आई हुई हैं और पूरा पेट्रियार्कियल सेटअप इसमें दिखाई पड़ रहा है। सर इंडिया में तो 1947 से वुमेन को वोटिंग राइट है जी। देश में तो 60s तक लोग वोटिंग राइट के लिए लड़ रहे थे, जिसे हम फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म कहते हैं, उसके लिए 60s तक वोटिंग राइट के लिए लड़ाई हुई। तो इंडिया और इंग्लैंड में मैं बता दूं कि 1921 में औरतों को मिला है वोट डालने का अधिकार, उससे पहले उनके पास राइट नहीं था। स्विट्जरलैंड में लेट, सबसे लेट सर। अच्छा, तो पश्चिमी सभ्यता में एक तो ये पेट्रियार्कल जो उनका माइंडसेट होता है वो उनकी फेरी टेल से पता लगता है। उसके अलावा एक चीज़ और मैंने नोटिस की है कि वहाँ पे गोरे और काले का भेदभाव बहुत है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा। आपको स्नो वाइट ही मिलेगी, वो कभी सांवली नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती, वो स्नो वाइट ही होनी है, क्योंकि उसको प्यारी बच्ची दिखाना है तो वाइट कर देंगे। शैतान जो है वो काले रंग का होता है, काला जो है वो डेविल का कलर होता है। काले को बिल्कुल उन्होंने, जो भी अच्छी चीज़ होती है वो वाइट होती है, जो बुरी चीज़ होती है, वाइट हाउस है, ब्लैक हाउस क्यों नहीं है? बिल्कुल सर। तो वो जो उनकी सोच है वो भी कहीं ना कहीं उनकी फेरी टेल्स में दिखाई पड़ती है। उस इंटरेस्टिंग, सॉरी सर, इंटरेस्टिंग बात ये है कि वहाँ तो मतलब देयर इज अ ह्यूज कॉन्ट्रास्ट इन द स्किन कलर, तो वहाँ रेशियल है। इंडिया में तो उतना ह्यूज कॉन्ट्रास्ट भी नहीं है, फिर भी वो जो 1-2% से गोरे और सांवले पे यहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन है सर जी। तो बिल्कुल आई एम टोटली अग्रीइंग टू योर पॉइंट। तो समाज जो है जी, जिस भी स्थिति में होता है, आपको क्या लगता है कि भारतीय समाज इस समय 2023 में कहाँ पे खड़ा है? Sir, a lot has changed and a lot is yet to change because we have a very diverse population, sir.
there's no uniformity. हमारे यहाँ अर्बन रूरल का जो कॉन्ट्रास्ट है वो बहुत ज़्यादा है, और आज भी एग्रीकल्चरल एंड जो हमारे कहते हैं जिस रूरल बैकग्राउंड में आज भी पॉपुलेशन भारत की ज़्यादा पाई जाती है. तो इसीलिए जो वेस्टर्न फेमिनिज्म है वो हम इंडिया में थोप नहीं सकते. We just cannot put it as it is verbatim. We have to make it according to our own needs and specification. But then empowerment is coming. Empowerment is coming in every aspect. Even I've down root and I have done my work, and I have realized, sir, that every aspect women are getting aware. A lot is yet to be done, but yet a lot has already been achieved. Now if we read the narratives, advertisement में sir India में आप देख सकते हो change आ गया है. पहले men will be men जो advertisement आया करता था, अब there are organization, उनका total focus सिर्फ यही है कि जो advertisements हैं उसमें हम कैसे जेंडर स्टीरियोटाइप को हटा सकते हैं. वॉशिंग मशीन के ऐड में एक मैन भी आ सकता है, ऐसा मशीन जो आदमी भी चला पाए, एक ऐसा ऐड उन्होंने डेवलप किया. तो अब जो कॉन्सेप्ट था कि किचन का जो ऐड होगा, डिश वॉशर का जो ऐड होगा, और जो एक वॉशिंग मशीन का ऐड होगा उसमें वुमेन को दिखाया जाएगा, बाइक और गाड़ी के ऐड में मैन को दिखाया जाएगा. उस छोटे छोटे चीज़ों पे अब ध्यान दिया जा रहा है. सो इंडिया हैज़ चेंज्ड. एंड so tomorrow if you ask me, if somebody asks me that which wave of feminism do you belong, you appear to be a feminist, so are you a radical feminist or a liberal feminist? I somehow do not attach myself to this term feminist. To the ism. Yeah, no, I do attach to ism, but not to feminism. Okay. I attach myself to humanist, to humanism. Tomorrow the future of India, I don't know what it will be. But what I want it to be is that there need not be such kind of discussion on women and male and feminism, to understand that other than biological differences, there is no difference between a man and a woman. That is, everybody is human too. So the concept should be of humanism. The concept should be of humanity and not of feminism or patriarchy. Well, apart from these ideas that the girl can help the sister, can help the brother, the mother can help the father, apart from this, is there any other thing that society needs to take note of, since you are such a socially aware writer? I'm sure you must have thought of other areas where there are disparities, where one thing is being favored and another thing is not being favored. There are so many prejudices we have. Yes, Swami. So, are you going to go after these prejudices, book after book? Or do you have other creative plans as well? I have tried to touch upon, at least, on not just the gender perspective, but also the racial perspective. My Snow White is fair. She's beautiful. Yeah. And so is my Red Riding Hood, who is dusky. Your Snow White is intelligent. Yeah. So that was the next point I was coming to. So Snow White is fair and beautiful, and so is Red Riding Hood. She's very dusky and yet beautiful. And my Snow White is very fair and beautiful, but known for her intelligence, not for her beauty. Yeah, and your Red Riding Hood, she is also known for her kindness, because compassion, exactly. Yeah, at the end, she forgives that animal. Sir, फेमिनिज्म का कभी-कभी वेव इतना ओवरपावरिंग हो जाता है कि अगर किसी वुमेन को सच में खाना बनाना पसंद है तो उसे डर लगे बोलने में कि भाई मुझे बोल दिया जाए कि तुम फेमिनिस्ट नहीं हो और तुम्हारा पति के लिए तुम खाना बनाती हो, तो इतना भी वो to be what you want, I think that is all about. So in my last scene, my beauty, she rides a horse. She knows how to handle a sword. She's all a warrior. But in the last scene, she holds Beast close to her bosom and cries. Because being a warrior doesn't mean that you have lost your sentiments and emotions. And the tear that falls on the beast he converts him into the prince. And that is the magic. Yes. That is the magic that you've created. Lovely. Now, what is the direction that your imagination is taking? After this, what? The next book that I'm planning to Next write. book or whatever it is that you've thought about or maybe not thought about.
So I am already writing my next book, Great. which is Constitution of India for Children. Oh, that's a great book. Yeah, that will be like different from the civics book that we read in school, and also not as complicated as the bare act of the Constitution. Yeah. Explaining the ideas to the children in very simple language, trying to relate with day to day. That's my next book I'm working upon. And what do you have to say about the English language that is used, that was used in writing our constitution? Clause and as per sub clause or yes, subjunct and this and that. You know, it's absolutely unreadable. सर मैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो नहीं बोलूँगी, कॉन्स्टिट्यूशन तो सिंपल होना चाहिए, पर आई कम फ्रॉम द लीगल बैकग्राउंड, अगर पूरी आईपीसी और सब कुछ को इतना सिंपल कर दिया जाए तो फिर वकील का सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा सर? तो थोड़ा तो कॉम्प्लिकेटेड रखना है कि हमें वकील की मदद चाहिए हो. In England, I remember having read somewhere that King Charles made a very serious effort, you know, to change the language in which law was written. तो उस तरह की कोई कोशिश यहाँ पे होगी या ऐसे ही बच्चों के लिए संविधान बनाया जाएगा कि उसको बच्चे समझ जाएं? वकीलों के लिए क्यों नहीं? सर ऐसे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है संविधान. No person shall be denied right to life and liberty except according to procedure established by law. That's okay, but there are other sentences that go on over pages. You know, the sentence doesn't end. उस तरीके की भाषा अब अंग्रेज भी नहीं उसको समझता है, वो उसके नहीं समझ में आती है. तो I believe simplifying the constitution is a great idea, and that the contents, the major things in the constitution should go to every child. That's a great idea. Thank you so much, sir. And creative आपकी जो urge है, उसके बारे में क्या कर रही हैं आप? ये फेरी टेल्स आपने उधर से उठाई, कॉन्स्टिट्यूशन आपने उधर से उठाया, आपकी अपनी जो क्रिएटिविटी है, इमेजिनेशन है, वो कब दिखाई पड़ेगी? सर दिखी इस किताब में? इसमें तो दिखी. और ये I call this creativity of a superior kind, because you are taking things that already exist and you are casting them in a new way, giving them new meanings. I mean, that's equally creative. Thank you, sir. But उसके अलावा जी. कहानी, नाटक, कविता लिखती हूँ सर. नहीं सुना है आप कविताएं भी लिखती हैं? जी सर. कुछ सुना दीजिए जी. अगर हो सके तो. मैंने एक कविता लिखी थी, अगेन क्योंकि फेमिनिस्ट की तरफ में लिखती कोई थी, दिक्कत जो नहीं, तो सुना है. नहीं चाहिए अर्जुन कोई इस बार मुझे बचाने को, नहीं पुकारूंगी मैं केशव अपनी लाज बचाने को, जो दाव लगा दे नारी की स्वीकार नहीं यह परिवार उस द्रौपदी को, इस बार मैं दुर्गा को गुहार लगाऊंगी, अपनी रक्षक मैं स्वयं बन जाऊंगी. Wow, lovely. We hope to read more from you in future. और संविधान वाली किताब जो बच्चों के लिए आप जिस पे काम कर रही हैं वो आने दीजिए. और उसके बाद मैं तो चाहूँगा एज ए लवर ऑफ लिटरेचर कि साहित्य में कुछ किया जाए. इतनी सारी चीज़ें हैं हमारे यहाँ, न्यूज़पेपर्स निकलते हैं, उसमें भी बच्चों के लिए चीज़ें होती हैं. आई मीन उसका क्या नया किया जा सकता है? कौन सी ऐसी चीज़ है जो की जाए रोज़ाना बेसिस पे जो कि वाकई में असरदार होगी, बच्चों के दिमाग पे लगेगी? इसके बारे में मेरे ख्याल से कॉमिक स्ट्रिप्स बहुत चल रही हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अब बन गए हैं और काफ़ी लिटरेचर उस पर आ गया है. और अब किताबें पढ़ने के कंपैरिजन में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में लोग ज़्यादा ढूंढते हैं ये मटेरियल. तो इज़ देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ यू एंटरिंग, यू नो? I would love if somebody converts this into an animated fairy tale where the Rapunzel is jumping from the tower and saving herself. The idea itself fascinates me. So
in this digitalization era, I mean, I wish if somebody uses this content also. Now this tendency, you know, to turn the word into an image, this, is it going to be harmful to literature, the printed word in the long run, or do you think literature will come around? No, Because sir, it is somehow harmful. The lovers of the literature will definitely read, but that the number and proportion of them really goes down. हैरी पॉटर सर जो एक क्लासिक बुक है, लॉस्ट हो जाती है कहीं ना कहीं मूवी में. जो रीडर्स हैं जिन्होंने एक्चुअली पूरी की पूरी फिलोसफर स्टोन और टोटल बुक पढ़ी है, उनसे आप पूछिएगा तो वो बोलेंगे कि मूवी में वो है ही नहीं मज़ा. So because movie forces you to look at a thing in one way, the way it is being depicted. Sometimes your imagination is much more creative than what has been depicted. yeah, I'll tell you what, when I read the first Harry Potter book, which I read very late, so I personally felt that it was a comment on the British public school system. The principal is Dumbledore, the teachers are all, you know, wizards, and all the lady teachers are witches, and there are these tournaments that are going on, and people are, you know, fighting against each other, and the house system and everything. I personally felt it was a very strong comment against the public school culture that England has given to the world. So sometimes interpretation Exactly. is much in depth than the actual literature. This is also true. बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का. हम लोग सब समय सीमा में बंधे हुए हैं, तो बहुत समय हमारे पास अब नहीं है. बहुत अच्छी चर्चा रही, और एक बार पुनः हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं फेयर टेल के लिए. एक बार ज़ोरदार तालियां आपके लिए.